हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं उसका टाइटल थोड़ा सा गैर मुनासिब सा लग रहा है कि व्हाई वुड एनीवन वांट टू गो टू इंडिया। तो फॉरेनर का इसमें रिव्यू है कि वो उसके बारे में क्या कहता है कि क्यों इंडिया जाना चाहेगा कोई फॉरेनर, मतलब व्हाई व्हाई ही प्रेफर टू डू दैट, आई मीन। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह का जरा है। क्या इसके अंदर बताया गया है कि क्यों जाना चाहेगा, क्या इसलिए सवाल किया गया है कि क्या वजह है, मतलब हम तो नहीं जाना चाहते, इस तरह की कोई बात तो नहीं है। क्योंकि इसका जो थंबनेल है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टाइप का है। चलें देखते हैं इसको। ओरिजिनल लिंक जो है आपको क्रिएटर का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इसमें क्या चक्कर है। No, I want real India. Poor people, hungry people. Dirty. India is one big slum. And even Einstein was said to believe stupid. Is India really a bad country? Are Indians really who some think they are? Or has the world been unfairly judging them all this time? People like very disaster. I don't like India. Night fam. Today we are doing this special video for a special country close to my heart. Because it's time to destroy the misconceptions that even you might have in your mind. This is what the world got wrong about India. First things first, let me remind you that we are talking about the second most populous country in the world. A massive 1.4 billion population, bigger than most continents. So it shouldn't be a surprise that there is no other country more diverse than India. And within that massive population, definitely there are geniuses born. I mean, Absolutely. what if I told you that you are able to use your internet and your phone right now because of an Indian scientist? Yes, you have to thank the supposed forgotten father of wireless telecommunication, Jagadish Chandra Bose. And to many people's surprise, there are so many more important inventions that came from India. The number 0 buttons, shampoo, cataract surgery, Ayurveda medicine, the USB, the Pentium chip, candied sugar, yoga, even the inspiration for snakes and ladders. The list is definitely much longer. So, for those who believe even for 1 second that Einstein's observation that Indians are stupid was true, tell them that the world's tech giants prefer Indians to work for them because they are highly skilled in science, technology, and engineering. In fact, in 2016 alone, India produced 2.6 million technology graduates. And that is not the end of it. Do you realize that today's biggest technology giants in the whole world right now are run by CEOs from India? Google, Microsoft, Twitter, Adobe. Indians are right there at the very top making world-changing decisions. Which is why it's quite sad that some people still think India is 100% poor and underdeveloped, that it's just slums. You know, when most people think of India, they think of poverty, they think of streaming people, they think of Gandhi. They're all just thinking that India is one big slum, which is not true. By 2030, it is estimated that 80% of Indians will belong to middle class. And perhaps the most common stereotype of them all is that Indians are dirty and chaotic. I mean, just look at how this woman treats her Indian neighbor. In East Indian colored skin, go back to your country, man. Or listen to the harsh comments of this American diplomat about a certain Indian ethnic group. And my skin became dirty and dark like the Tamilians. This comment is 10 years old, but the unfair stereotype remains until today. In 2022, we need to come together and put a stop in judging entire nations based on only negatives. It is lazy, it is insulting, and it is... बेसिकली मसला ये है कि इंडिया के अंदर जो है ना सर्वाइवल मोड है, मतलब कि अमीर से अमीर भी मिल जाएगा और गरीब से गरीब भी मिल जाएगा। मतलब बाहर की कंट्री में तो ये नहीं कि अगर कोई गरीब हो जाता है तो वो गरीब नहीं होता। इन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए इस तरह के, और उसको भी अगर गरीब भी है ना, मतलब तो उसको जो है उसकी जो मिनिमम इनकम है ना वो बहुत ज्यादा होती है ना।
लेकिन इंडिया के अंदर सर्वाइवल मोड ऐसा है कि अगर आपकी बहुत कम मिनिमल इनकम है, बहुत ही कम, तो भी आप सर्वाइव कर सकते हैं वहां पे। तो सर्वाइवल मोड है वो, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई आप हो ये तो गरीब है और ये इस तरह रह रहा है, उस तरह इसको फैसिलिटीज नहीं है। बात ये है इसको फैसिलिटीज हैं, लेकिन थोड़ी सी इसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, फैसिलिटीज को लेने के लिए, अवेल करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा गरीब है लेकिन उसका सर्वाइवल है वहां पे इंडिया के अंदर इस लेवल पर भी। मतलब मिनिमम इनकम जो है बहुत अगर कम भी है तो एक सर्वाइवल मोड मौजूद है, सर्वाइवल लेयर मौजूद है, तो वो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको नेगेटिव में लिया जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। Unfair. Now, of course, it's very important to say that like any other country, India is not perfect and there will always be things that need help, that need to improve. But those negative traits should not make us forget that India is the land of diversity, of a culture so rich and colorful, of people so kind, friendly and genuine. Just like recently we made a video about Africa, it's time that the world opens their eyes to the positives of India, because they are thriving and they are very much capable of progress. For all we know, with 1.4 billion Indians coming together in a few years' time, India might be on its way to becoming a global superpower. And I will close this video with an observation I have after covering some topics from India. Unfortunately, I've noticed that whenever any type of video is made about India, some people will comment negative things. It's like they are incapable to acknowledge the positives and they focus only on the negatives, and they call me, oh, I didn't do my research or anything like that. Once again, I fully acknowledge that there are issues in India just like there are issues in Africa, because we just recently made a video about African stereotypes. It doesn't matter that there are अफ्रीका और इंडिया को जो है मिक्स करना नहीं चाहिए ना। मतलब अफ्रीका एक बहुत ही अलग सोच है और इंडिया एक बहुत ही अलग सोच है, बहुत अलग कल्चर है, और इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है। मतलब कि वो उसी उसमें रखा जाए तो अच्छी बात है। होता ये है कि ये कंट्री है अमेरिका कनाडा जैसे, ये लोग जो हैं ये वो कंट्री नहीं है ना। मतलब ये तो यहाँ से जब एक मैच्योर हो जाता है बंदा, इंडिया पाकिस्तान या पूरी दुनिया में से कहीं भी, और बहुत अच्छा लाइक बंदा वहां से वो ले लेते हैं, तो वो जाके एक कंट्री तैयार हुआ है। लेकिन लाइक बंदा अगर वो बन रहा है तो किस तरह बन रहा है, क्या किस प्रोसेस से गुजर रहा है, वो सारा प्रोसेस तो इंडिया है ना। इंडिया इज द फैक्ट्री ना, इज द इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग पीपल। ह्यूमन रिसोर्स की फैक्ट्री है इंडिया, और ह्यूमन रिसोर्स जाके वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा क्लीन दिख रहा है, समझ रहे हैं। वो जो कहते हैं ना किचन तो डर्टी होता है ना यार, थोड़ा बहुत किचन अगर डर्टी हो रहा है तो क्योंकि वहाँ काम होता है यार, वहाँ पे कुछ खाना पकता है। आप जा रहे हो, आप डायरेक्ट टेबल देख रहे हो रेस्टोरेंट के अंदर पड़ी हुई और कह रहे हो वाह यार यहाँ तो खाना कितना अच्छा सजा हुआ है, वो तो बहुत गंदा है। वो किचन है मेरा भाई, वहाँ पे तैयार हो रहा है। issues. We cannot always complain and focus only on the negatives. There is no progress if you only focus on the negatives. And Absolutely, we here absolutely. at Project Nightfall have many times covered things that are very difficult, that are very negative. This time, once again, this video is to preach and celebrate India, and I hope that you will join me in this video by sharing it, commenting on it, positive things and not the negative. Bye bye. No one will pass the negative things. ये फॉरनर्स ही हैं जो कभी कभार इस तरह भूल जाते हैं, और क्योंकि उनको यार दर्द नहीं है ना इस साइड का, है ना। उनको अपनी साइड का मसले हैं, अपनी साइड की वो है, वो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, और उसको मजीद वहाँ पे जाके माइंडसेट ही हो जाता है कि यार मजीद पैसा और पैसा और पैसे के अलावा कुछ सोचते ही नहीं वो लोग यार। यहाँ पे इंसानियत है, यहाँ इंसानियत के बारे में सोचा जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे अच्छे इंसान तैयार होते हैं और फिर जाके जो है वहाँ पे वो उसको सर्व करते हैं। किसी भी कंट्री को ले लें, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और अपना जो भी है ऊपर बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ से ये जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ क्रीम जाती है। मतलब ये कि आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यार इंडिया को जो कि अब सुपर पावर बनने के करीब है, सुपर पावर तक बन चुका है, उसको ये मान नहीं रहे, तो उसको जो आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे सुपर पावर से, तो ज़रा उसको नोट भी तो करें कि वो कितनी हार्डशिप से गुजर रहा है और किस तरह एक मैन्युफैक्चर करता है एक अपने ह्यूमन रिसोर्स को, कौन से प्रोसेस से वो वहाँ से गुजरता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, टैलेंट जो है ना वो ऐसी जगह पे नहीं पाया जाता जहाँ पे आसाइशें हों। सिंपल सी बात है, टैलेंट नाम ही इसका है कि वो अंदर से निकल के आता है,
जब आप मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर आप अपने आप को प्रेशर में लेके आते हैं, प्रेशर में लेके आते हैं तो फिर आप टैलेंटेड होते हैं। तो जहाँ प्रेशर नहीं होगा, मिसाल तो ऐसे कंट्रीज, तो वहाँ टैलेंट भी नहीं होगा। लेकिन होता ये है अनफॉर्चुनेटली कि जब यहाँ पे बंदा टैलेंटेड हो जाता है अच्छा खासा ज़बरदस्त, तो फिर उसको वहाँ पे बुला लिया जाता है। और यही वजह है कि इंडिया की जो कहते हैं ना ऊपर आने की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी कम है, मतलब अब बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी कम है। अगर ये प्रोसेस भी रुक गया है ना किसी तरह से कि लोग बाहर जाके अंडा, मुर्गी यहाँ बन रही है, पैदा हो रही है और अंडा वहाँ जाके दे रही है, तो ये अगर अंडे भी यहीं पे दिए जाए ना तो इंडिया तो यूँ ऊपर तरक्की करना शुरू कर दे। और ये इस तरह की जो माइंडसेट है वो बिल्कुल फ्रॉडिश ना गए, लोगों के माइंडसेट ही बदल जाए, लोग ट्रेंड पे आ जाए इंडिया के, समझ रहे हैं। हमने तो बहुत ट्रेंड अपनाया है, यूरोपियन ट्रेंड बहुत अपनाया और उसी को कूल समझा है अब तक, और मजबूरी भी है भाई, क्या करें। बड़े बड़े ब्रांड उसी के अंदर है, इस वक्त मैं जैकेट जो पहना हूँ ये भी उसी तरह की है, यूरोपियन स्टाइल की है, पर क्या करें, गर्मी यही दे रही है, समझ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन बहुत है। तो एनीवे गाइस, इट वाज अ वेरी नाइस वीडियो। इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।